It was fun. मेरा पैर मेरा my feet were just इतनी इरिटेशन हो रही थी फीट में कि जलन इतनी खुजली इतनी हालत हो गई थी. And then he came और उसने एक तो प्रोसेस रन किया, कुछ क्लियरिंग की, and it got so much ease. How does it get any better than this? ना अभी लगता है हमारी मॉर्निंग के कॉल में ना either one of आराधना से लेके सभी takes Umesh name at least once कि we spoke to Umesh and it got done. We spoke to Umesh and he's been such a contribution वगैरह. I'm like yes. I'm like Umesh जी क्यों हमने क्या पाप किए हैं कि हमें I'm just kidding. I haven't reached out to him separately per se, but I'm so grateful you all are there and part of my life and my morning routine because whatever I need comes to me. However, it has been really मतलब और फिर पता समझ नहीं आ रहा था कि वो हमने सोचा था कि मैं सच्ची में सोचती थी कि मैंने 4 आदमी छोड़ दिए, पर जब मैंने उमेश के साथ किए तो पता चला कि 4 नहीं, मैं तो 12 पकड़ रखे. And one, it felt so touching again when Aradhana was sharing that Umesh spent so much time with me and I was feeling so good. From a normal point of view, she being the kind of facilitator or whatsoever. But he's really amazing. Yeah, and we are so appreciative when we are actually receiving from someone. So I felt so good. I'm so grateful, so grateful for him and all of you again. Thank you. Umesh, I am coming to your life. I'm like, I don't like this being left out. Let's go attack Umesh. With lots of love. Thank you for freedom. Okay, we shall keep quiet. You please start your call. इसमें और एक तो इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं बोलूं. तो कुछ भी किसी के भी क्वेश्चन या कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो वो भी कर ही सकते हो. स्टार्ट काइंड ऑफ सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. मैं फूडी हूँ और ऐसा है कि दिन में 10 मील्स भी खा सकता हूँ, इतना फूडी हूँ. और इन्विटेशन भी सबके लिए वो इन्विटेशन भी है कि हर कोई उतना खा सकता है द मोमेंट जितना पसंद आए. जो चीज जितनी पसंद आए कि किसी से उसके लिए ना वेट बढ़ता है ना कम होता है ना हेल्थ पे इफेक्ट करता है खाना. वो हमारी मिथ है या बचपन से लेके जैसे अपब्रिंगिंग होती है कि ये देख के उन्होंने हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स से सुना होता है या देख होते हैं कि जो भी कि इससे ये होता है. वो मेडिकल साइंस में भी काफी सारी चीजें इनकॉर्पोरेट होके आई है कि इसमें ये नहीं जाना चाहिए, इसमें ये नहीं जाना चाहिए. अल्टीमेटली खाना अगर मेरे हिसाब से देखो तो खाना एक प्लेजर है, लग्जरी है. हर मोमेंट में हर बाइट के साथ इतना एंजॉय कर सकते हैं जैसे पूरी अपने आप में वो लाइफ जी रहे हैं. तो खाते हैं उतना एंजॉय कर सकते हो खुद को और करते भी हैं, पर खुद को उसके लिए कितना रोकते हैं हम. तो कहीं ना कहीं कुछ डर से. So enjoyment is wrong for us ना, मजा करना is wrong for us. Yes. We have to struggle. मतलब हर एक उसमें enjoyment कैसे हो जाए, मतलब कि ज्यादा मजे कर लेंगे तो मुश्किल आ जाएगी ना. हाँ बिल्कुल. हाँ ब्यूटीफुल. और हम वो तभी सही भी है एक्चुअली. ज्यादा मजा करना टू मच हो जाएगा तो हर चीज में टू मच तो कंट्रोल तो चाहिए ही चाहिए. I think you broke that also that day. Umesh was, जब मेरे को इरिटेशन हो रही थी पैरों में, he was with me and Geeta till 3 o'clock in the morning. And मतलब हम लोगों ने एक तो इतने हंसे हैं, नींद भी आ रही है पर but he kept on kept on taking me. नहीं फिर ऐसा कैसे कि अब मेरे दिमाग में अब मैं अपने आप ही आता अच्छा ये किसने कहा. आज आई एम जस्ट lying down and just talking to you क्योंकि अच्छा ये किसने कहा कि बैठ के करना है. ये किसने कहा कि दूसरे को बुरा लगेगा. लगेगा तो वो उसको लगेगा वो देखे. और कितनी जगह पे हम खुद को रोक लेते हैं किसको कितनी जगह हम खुद को रोक लेते हैं. हाँ
हाँ हाँ चलना एक्चुअली हमारे अंदर ही हो रहा होता है कि अच्छा ये करेंगे यस तो यस कोई यस। मेरे लिए करे, मेरे आगे करे तो हो सकता है हमको इंसल्टिंग फील हो। और कोई ये कितनी बार, जैसे अभी पीछे सर्दी थी, सो मेनी टाइम जैसे मेरे को सर्दी लग रही है, आई वांट टू लाई डाउन है, बट हाँ उमेश की जैसे 5-7 बजे कॉल है, नहीं उसमें दिल नहीं करा ये। तो आज मैंने सोचा यार अगर ठीक है 7 बजे है तो इवन इफ आई एम लाइंग डाउन, व्हाई कांट आई लिसन टू हिम, व्हाई कांट आई टॉक टू हिम, यू नो कि ओके मैं अपने कंफर्ट में क्यों नहीं कर सकती हूँ, व्हाई आई हैव टू सिट एंड टॉक टू हिम एंड बी ऑन द कॉल लाइक दैट। सो आई सेड नो, अब तो मैं आज उसमें भी आऊंगी, उसमें क्या है। या और मैंने कितने सारी लिमिटेशन इसमें ही तोड़ी, जैसे मैं पहले नहा के कॉल में आना था या ऐसे तैयार होके हमें आना पता है। है। हाँ और अब दैट्स इट इज मी की। कि हाँ बच्ची बन के आते थे आप हाँ। सुबह सुबह। अब मैं नहाती भी नहीं हूँ कितनी बार, ये वो किसने बोला भैया नहा के आना हाँ है। एक्चुअली फैक्ट है। He cleared so much, so much. Thank you, Umesh. थैंक यू थैंक यू। नहीं ना कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि लिंक देख ही नहीं है किसी 2-3 जगह से ज्वाइन करने के लिए वो। आज we were reading me and Geeta keep on reading sometime जब हमें मिलता है टाइम, तो आज हमने 10 कीज फिर से शुरू क्या करी, हमारे हम चलते रहते हैं। वेरी तो नाइस। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, इट वाज मतलब जितनी बार पढ़ते हैं ना निशुना, इतनी बार क्लैरिटी आती रहती है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड ये उमेश का भी इसमें काफी चीजें इसने क्लियर कर दी ना, तो अब वो और क्लैरिटी के साथ पढ़ रहे थे। How does it get any better than this? I am very pleased. चलो आप कितना रोकते हो खुद को खाने से या उसका डर? हाँ हाँ, लिसुना की बारी है। हाँ मुझे I have enough and more. And my points of view about food is like I am a foodie too. I cook really amazing food, but I Yes. can't eat everything that I cook. But and each time any nice things, I'm like, you are so fat. You are this old. Who will look after you if you go sick? I mean, I have a millions of points of view about food, and I love food. सच्ची मैं बता रही हूँ. I mean, I have so many beautiful stories about food, but the क्या बोलते हैं वो गिल्ट जो अटैच हुआ है ना सभी ने सालों से या अरसों से और from previous lifetimes, people have forced on me कि you have this nature of putting on weight. बिना खाई मोटी हो जाओगे, तो खाओगे तो पूछो ही मत. All that conversation. So yes. It's लोग मोटे हो जाते हैं क्योंकि खाना कुछ भी नहीं इफेक्ट करता है। exactly. एक्चुअली हम किस तरह उसके लिए सोचते हैं वो इफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट। और एक्चुअली अगर सबसे पूछो आपके लिए तो क्वेश्चन है ही सर आपसे, तो जस्ट कर रहा हूँ पर सब अगर हैं कितने जनों को देखा है जो कितना भी ढले ही होते हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होते हैं। पर मुझे लगे कि ये अगर इतना उमेश, खा लें पर तो जब मैं देखे जो खाते होते हैं और वो पतले होते हैं, उस समय लोग बोल देते हैं इनका मेटाबॉलिज्म हाई है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म लो है। हाँ. So I have तुम्हारी बर्निंग पावर लेस है, उनकी बर्निंग पावर मोर है, इसके लिए वो पतले रहते हैं। सो व्हाट इज इट, कैन वी क्लियर ऑन दैट yeah. कि अब हमारी एज हो गई है, एंड हमारा एज होने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म अब लेस हो गया। हमारा तो एज से कुछ लेना देना है ही नहीं. मैं बचपन से ही चब्बी मोटी थी, अभी भी चब्बी मोटी हूँ. And I mean, I have no problem with amount of food or whatsoever. I actually eat like the amount a 6 or 7-year-old eat, that much. However, I can look at food and I can gain weight. And then there I have people around me, वो लोग जैसे उमेश ने बोला कि 10-15 बार भी खाते हैं, इतना सारा खाते हैं, they look like this. And I go like, why? God, why? And also, listen, what I have seen is like if I just see you, like I have not seen you full wo, Yeah, but if I'm just seeing you like this, you don't look fat to me. Half the time, thing is कि we buy, कि किसी ने बोला मोटे लग रहे हो। मैंने कई बार मैंने अपने बचपन में देखा कि मेरे को सब बोलते थे बड़ी मोटी होती है, एंड दैट डे आई वाज लुकिंग एट माय पिक्चर्स, रियली आई वाज वेरी स्मार्ट, बड़ी मैं को यार ये तो हीरोइन से कम है नहीं, ठीक है। अभी भी थोड़ी कम है।
नहीं, मैं मतलब पतली I भी सब understood. कुछ Yeah, है, correct. और जबकि उस समय एवरीबडी वाज सेइंग कि मैं बड़ी मोटी हूँ, मैं बड़ी मोटी हूँ, तो मैं आज अपनी पिक्चर को देखी यार, मैंने तब से वो पॉइंट ऑफ व्यू बाय कर रखा है, मैं मोटी हूँ, एंड वही भजन गा रही हूँ कि मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, एंड ट्रस्ट मी, लाइक इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट यू, आई आई एम नॉट, मतलब कि मुझे नहीं लगता कि तुम मोटे हो। अब किस एंगल से लोग बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। एक उसका भी था वो जो राजश्री, हाँ, है ना, एंड शी हैज सो मच ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कितनी मोटी हूँ, मैं कितनी मोटी हूँ, और मैं हर बार उसको देखती हूँ, जब भी मैं कहती हूँ यार ये कह रही है मैं मोटी हूँ, मतलब ये कहाँ से मोटी है। I know. एंड वी जस्ट कीप ऑन हार्पिंग दैट ना, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। We project that reality on us too, just because यस, others are doing that on us. हाँ हाँ। Chalo, we have to let Umesh talk. Umesh, tell us what can we do and we with just a lot of ease. चीजों के पॉइंट वो होते हैं कि अच्छा कि एज हो गई है या इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, पर मेटाबॉलिज्म भी क्या है, वो भी हमारी क्रिएट करते हैं ना, वे हम ही क्रिएट करते हैं हमारे थॉट्स से, या किस तरह हम चीजों को लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी होती है, वो नेचुरली फ्लो में रहती है, अनलेस कि जब हम उसके अराउंड कुछ ब्लॉक डालें या कोई ना कोई थॉट अटक रहा हो जिसकी वजह से वो फ्लो में नहीं चल रहा है, नेचुरल फ्लो में नहीं आ रहा है। द मोमेंट वो एड्रेस करते हैं, वो नेचुरल फ्लो में आता है, तो अपने आप ही मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग हो जाता है, डाइजेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाता है, और एक्चुअली जो डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म वो कहीं ना कहीं जैसे बोला कि थॉट्स इमोशंस या फीलिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं, अटक रहे होते हैं। तो जब वो कोई भी बात ऐसी होती है कि जब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या ऐसे कैसे हो गया हमने सोचा भी नहीं होता है, बियॉन्ड हो जाता है, तो वो बहुत बार पेट में कर लेता है, डाइजेशन को अनईज कर लेता है। कितनी देर तक हम उसको कितने टाइम तक होल्ड करते हैं, उतना वो स्ट्रांग होता जाता है, लेयर्स के बाद लेयर्स डेवलप होती जाती है। नॉर्मली हर चीज भाई एक टाइम होता है, आधे 1 घंटे के बाद सेटल हो जाती है, पर वैसे इमोशंस बनते 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 वो हो जाते हैं, जितने स्ट्रांग होते जाते हैं, तो फिर कुछ भी खाया उसका इफेक्ट हो गया, एकदम से वो शुरू नहीं हो जाता है कि आज सोचा और सुबह उसी टाइम में हो जाएगा। कुछ कुछ होता है वैसे भी कि उतना डीपली ले लिया, पर 99% ऐसा होता है कि स्लोली और ग्रेजुअली वो चीजें डेवलप होती है, तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाती है। एक बार सुना तब तक तो उसका रिएक्शन जाता भी नहीं है कि अच्छा इससे ये हो सकता है, उस टाइम तो सुना है यार, एडजस्ट कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, या होगा ठीक है चलेगा। पर जब मोमेंट किसी को देख लिया, या किसी और को क्लोज वन को, या किसी उसमें देख लिया ना कि उसने बोला ये ऐसे ही ऐसे, जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस होल्ड करता हो, जैसे डॉक्टर ने बोला या फैमिली में किसी ने प्यार के साथ बोल दिया कि मेरे को तेरी केयर है और तू ये करेगी तो ये हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ नहीं कर, या बोल रही हूँ नहीं कर, तो उसको हम केयर से उससे एसोसिएट कर लेते हैं, और वो इफेक्ट ज्यादा कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है इफेक्ट, कि अच्छा मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स या मेरे क्लोज वंस या हस्बैंड या स्पाउस तो कभी मेरे लिए खराब तो नहीं सोच सकते, और वो ये बोल रहे हैं कि ये खाने से ये होगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, उनको रियल है, तो वैसे हम चीजों को रियल बनाते जाते हैं। आई वुड लाइक टू शो यार हम बिग टीम, एंड यू कैन स्विच ऑन द कैमरा और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, माइक एंड वीडियो, या यू कैन, परमिशन दी हुई है उसमें, किसी का भी लॉक नहीं है, अनम्यूट करना है आपको, और Oh yes, हो गया. है यार, अगर किसी में लॉक नहीं रखा है, एक्चुअली इंटरेक्टिव ही है, सेशन है तो सबके लिए तभी ओपन ही रखा था, कभी भी कोई भी अनम्यूट करके पूछ सकता है। Hi, Umesh. Hi. हाय, हाउ आर यू? Yeah, it is my first call with you finally. So, and whatever you are saying, it is very much like feeling. Yeah, it is a truth because it is a build-up of so many years. So I'm also facing with diabetes. So they are very like after I was diagnosed like 2 years back, I had a love-hate kind of a relationship with food. ओके, So I thought that I don't deserve eating. I literally at one point thought I don't deserve to eat anything. So because the blood sugar levels were high, but it is a build-up of emotions and like I don't want to give up. Like share with anything. Like I don't want to give my money or my time or my energy to even my parents also because they were going through some health issue and after that I was giving too much and I think that developed suddenly.
Yeah. And also, if I ask you, okay, how much happiness are you avoiding, or where and how many places are you avoiding your happiness? I am putting it into like marriage, the right person, the right career, the right body. Not happy with my body. Like I gained weight when I went to a hostel. Like I was eating too much food to feel like okay, safe or maybe not homesickness. Uh-huh. Yeah, I was about to come to that point only, and that is brilliant. The most, but our body also holds, reflects how we are taking things or what's going on inside us. And Yes, weight is yes, one of the most common factors to show up in the body of represents insecurity. yes. Feel insecure or weak, Balik ka na niya, udah. we have to Not look feeling safe, not feeling safe, like feeling living alone. How will I take care? Like, how will I manage? Or certain truth that it should not be getting out, like some secret that only I should know. yeah. 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 And that also you can we love actually we can continue to do that, but how we are holding it and how we are perceiving it, what we are thinking wrong or so significant or fearful of that, if people come to know this thing, then it's going to be a problem. That is where we are creating that. Once we Yes, get clear, yes, okay, I am hiding because of my comfort. I don't want to share the things that I don't want to share, and that is absolutely fine. We don't want to show them or share them too, and also at the same time, we are making that wrong too. yes, And that's what makes us insecure about. So in this yeah, whole we go to the core of each and everything that is showing up or that is creating insecurity, that is creating weight in the body. Or the effect yes, of the food or emotions, whatever. It's not only about yes. the food. That's why I had mentioned all the emotions. Food represents all the emotions. If you have read the sentence. Yeah. When I read your mail, like it felt very nice that so many good words are there with food, like pleasure, like luxury. Yes, thank you. Yeah. And even diabetes can also be completely cured with this. Yes, yes. Uh-huh. Because diabetes also represents what is going on inside, and the most prominent question I ask is where and how many places you are avoiding the happiness. Actually, that is the core of it, and around that we have millions of emotions or things or events that you might be holding that is creating the diabetes. Yeah. So I And will ask this question. happy without the family, and how you can be happy when Yes, yes. so joyful, Yeah. you are so stressed. So even that thought itself can create a diabetes in your heart. Yeah. So where and how I'm avoiding my happiness? Yeah. Mhm. And that is just a one question, but there are Yeah, one question. to dive deeper. And what we do is, well, we will go to the core of every thought, feeling, and emotion, whatever that is creating unease in your body, whether Okay. it's emotion, whether it's feeling, whether it's discomfort, pain, or like that. Okay. Thank you. Yeah, Ramli. Well, hello, good evening, and thanks for arranging such a lovely call. Well, I am since after the COVID has gone, Yeah. recently I lost my chachaji also on the 18th of Jan because of this cold stuff. So Yeah. I would know how can we use food Mhm. to heal us as well for the small ailments that we face, like cold cough is going on. I have witnessed so many people with cold and cough and then going up uh, getting over with heart attacks. Okay. So when it's going cold and cough, there are going to be a lot of emotions around confusion. They are not able to choose, or there's going to be, if we choose this, what happens? What if this? What if this? What if that? Well, there are going to be lots of emotions around that. Whether it can be around relationship, it can be around business, it can be around family, it can be around
choosing or changing their career or job or whatever, or even what subject they choose if they are studying. Well, whatever, it can be show up in a million ways, but it depends on person to person. Ki what is, if it, Somehow it is asking about even, about heartbreaks. Is it about heartbreaks? Yeah, it can be definitely. Okay, why it happened, how it happened, what if I did this in that way? Definitely it can be. That's what I was about to say. If it, for whom it is, that person can answer it completely for himself. And that is how I don't put the way I facilitate. It's not I will give you the answer this equals to this. I will ask you, and the same situation can show up for different person in different way. Stress can be headache for someone, can be relaxation for someone when they are stressed, and can be very painful or drained at the same time. It is how we had brought up and how we had stored associated with that things, with that emotion. That is how our body shows up. It can be same thing happen to different people. The same thing reacts very differently. And I ask questions. Well, I can take you in the place where, and I will ask you, listening to you, whatever you are going to, I will ask you whatever you are going to narrate me. I am going to ask you from the questions from that word, and that will lead you, drive you to your the depth of your mind, where you are holding the emotions, or from where it is coming from. And you are only the person who is going to tell me what is coming up when I am asking this thing. I get it. Somehow we use food as abuse also. Somehow it is coming to abuse. Somehow we use food to abuse ourselves. Yeah. We use food to lose ourselves. What did you say? Sorry, the voice got bad. Abuse, ABUSE. Yeah. What? Abuse, you said, right? Yeah, I said abuse. Like everywhere, like we have been abusing ourselves, and we took food also to abuse our bodies. Yes. Yeah. So then we must keep feeling pathetic. We must keep feeling pain. We must keep feeling. Yes. Rather than having the power to change. Yes. Definitely. And why are we doing that? If you go to the depth of it again, when you go to the core of it, how it is benefiting you. Because what happens is our mind always chooses pleasure or pain. It might be painful for you, but for our mind, it's pleasure, because whatever is known, whatever we have experienced, whatever is known for our mind, that is pleasure. Even how painful it can be for us in the physical body or physical, but if it's known for our mind, then it's pleasure for mind. And however comfortable it's going to be, but if we hadn't experienced, or our mind isn't aware of what it is going to create or how it will show up, so that is going to be the pain for our mind, and you always resist to go for that change, because that is the pain for mind, so it will stop you from choosing that thing. And that is how we hold so many. So how do we change this, Umesh? How do we change it? Like if I'm having pain just now I just आपने अभी जिस हिसाब से बात किया, so it is like it is a pleasure for my mind, because this is known. The pain is known to the mind now. Mind, yeah. So now like if I want to change, that is pain for my mind, right? Yes. So how do I change from pleasure to pain? Okay, this is your mind is very comfortable with the pain. He knows how to sit in the body, how you are. कैसे रहना है, कैसे चलना है. Now my mind knows. You will be insecure if you leave that pain. मतलब what will happen is, हाँ कि अगर मैं होगा तो फिर मैं कैसे अब कैसे, अभी तो मैं बड़ी है कि सब ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, अगर मेरा पेन चला जाएगा तो फिर वो कैसे होगा. So but still I would like to choose different. How do I choose it now?
Yeah. Get So over it. yeah, so that is where, that is what we are going to do in the workshop, classes coming. Okay. And I will Okay. ask the question, listening to you, कि how long you are going through, what happened, when was the first time you felt that pain. You were You don't asking have me. to remember anything. It will come out by asking my words. The words Okay. I'm going to ask you will lead you to the point where your mind requires your attention, or wherever Okay. you're holding the files around that thing. Okay. Umesh, it might look in the beginning it is completely irrelevant, or it doesn't have. No, I have experienced your and it is so much relevant, and it has freed me so much. Like, thank you. Umesh, I just joined. No, thank Hello. you. Hello. Yeah. Hello, Umesh. Umesh. Hello. Yeah. Hi, Sumita, Revti here. just a minute. After. Yeah. Yes. I'm Revti speaking. Hello. Yeah. That's Can what I was. can How are can you? hear me? Yeah, I'm fine. I could just join. I just want to know, do you eat at all? Do you eat? I just want to know what you eat. I can. The 6 meals are normal for me. Everything, just vegetarian, but everything I can. I am eating. Mexican, Chinese, Punjabi, street food, se chaat, and pizza, burger. You Ah, name it, and I can have that with that. Anju and Sumita, just a minute. Just after everything here, coming to you, both of you, Sumita first, and then. Yeah, Revati. mm. Yeah, I Umesh, can I say? just wonder, do you Yeah. eat at all? Okay. People who had spent time with me are aware. अनिता जी यहाँ पे एक तो है, if you can ask her, she will let you know कि कितना खाता हूँ. सबसे पहले बैठता था start. Yes. No, but what I saw was कि like ये खाता बड़े enjoying, like I saw Umesh eating very joyfully and enjoy करके. मतलब मैंने देखा था कि food में पूरी attention थी. मैं यही वॉच कर रही थी, फूड में पूरी टेंशन थी, और एक एक बाइट को ही वाज एंजॉयिंग इट, जैसे होता है ना कि लाइक वाओ, दैट वाज द वे ही वाज ईटिंग. मैंने भी ये, जब मैं अभी आपके साथ रिट्रीट में थी, आई वाज वाचिंग इट. मैं देखती हूँ उमेश खाता कैसे है. But Umesh, if we start eating like that, we'll blow up like a balloon. No. The way he was eating, it was there was a joy. हम जब खाते हैं ना, there's no joy. अंदर से हमारा एक restriction रहती है कि यार मैं खा तो रही हूँ, मजा तो आ रहा है, पर कहीं ये weight gain ना हो जाए. But when he was eating, there was total joy, total presence. And एक एक bite को he was like, I could just see that the joy of eating that bite. The way he was. हम लोग खाते हैं, but then underlying point of view हमारे में रहता है, that you can see with the energy of the person, कि वो underlying point of view रहता है कि यार ये खाने से मोटे हो जाएंगे, यार कम ही खा लें, यार बहुत खा लिया, या ये घी भी है, इसमें चीनी भी है, डॉक्टर ने मना किया है, all this point of views. या फिर some emotion, we are thinking about something, अरे यार खा तो रहे हैं पर हमें यहाँ जाना है, वो करना है, मेरे घर में क्या और होगा, या वो उसने ऐसे क्यों कहा, with all those point of views we are eating. So we are eating that emotions also. But when he was eating, he was totally present. I could just see it. And one bite was a joy to it. He was not paying attention. He was talking to us. That also, he was talking, he was answering everything. But that joy of eating, like present with the food, that is what I saw. Umesh, yeah. Yeah, hello. Umesh, even if I eat one spoon, I feel I put on weight. Join the call. I am going to share in the end what I am coming up with. You don't have to think about anything after that thing. If you like, I have a whole team to vouch for that we had done the last series, and that Ravi were both of them were part of that call, and you can ask them or the person, all the members who have joined, they are enjoying so joyfully and without gaining.
See, I took the session not for the food, but I Just took a it for minute, my please. pain. And believe me, it's everything is connected. And he just, मतलब मैं जितना भी बोलूं उमेश उतना कम है. You know, you freed me so much. Thank you. Oh, thank you. My pleasure. Yes, Smita. Yeah, Umesh, sorry I joined late. Yeah, I no am a nutritionist. I am a nutritionist for me, but for me it is difficult. I teach my client to connect with food and be happy while eating. But when it's up to me, honestly speaking, the day I eat, Yeah. I'm very scared to go on weighing scale. Matlab with me, weighing scale ka is relation is like a, so Yeah. much anti. Yes. But that I want to be free from myself because when I'm telling my clients, somewhere I feel कि पहले मैं तो connect to then only I can teach them, But still, it's my professions. I do it, so Yeah. So I want to know how do I, come out with this kind of a notion, this myth. Yeah. Yes. If I ask you what makes you think कि भाई अगर आपने कुछ भी खाया तो वेट बढ़ जाएगा? Maybe that food is a culprit, you feel that food is a culprit. वो थोड़ा सा And when I feel the food traveling in my body, and I feel, yeah, this food is stored here, the food is stored there, I feel so scared to eat. Yeah. So would you like to release all that wherever the food is stored and have the I pleasure, feel like to the have food the is pleasure getting of stored here, there, everywhere, I really feel that. So I'm yeah. so That's scared what to I eat. was asking. So would you really like to release that food, all the food that is stored, and enjoy eating every bite and everything, whatever and how much you like to eat? I How like to many eat, but times you then like to eat? I like to eat. I really like to eat. But the thing is, I'm so scared that I'll put on weight. ये तो लेकिन उसको स्कैर तो उसका तो वो डर तो मैं भगा दूंगा. Please choose for yourself after that. You will be having everything and anything without fear. Yeah, Ravi, thank you. But weighing scale से कैसे, how do I connect good relationship with that scale? हालांकि I know that's not a parameter to No, judge yourself, but everything outside us is a reflection of our world. yeah. The outside world is reflection of our inner world, whether it's relationship, whether it's food Yeah. or ease, disease, pains, everything is just a reflection of our inner world. That's why I was earlier as I sharing, I had mentioned all the points, and we do, however we do one thing, we do everything in the similar way. Okay. So it's not about only food, it represents the money situation also, relationships also, comfort also, luxury also, joy also, and unease, pain, discomfort at the same time, that also. So once we Okay. attend that, everything will be sorted out, everything will start falling in place. Yeah. Even as Thank you. Ravi had commented, shared the beautiful experiences, and thank you, Ravi, for that. And also, I would like to share that there was allergies too, 3 or 4 allergies I think he had, and that was also completely released from that. Because all the allergies are also one of the allergies because of food we have or with anything, whether it's with fragrance, perfume, smoke, dust or anything, that is also representation of how we had associated and where we had associated it with. That can also be cured completely with this. And not only relationship, and relationship तो definitely for sure. जब relationship में हम control नहीं कर सकते तो food पे आ जाता है कि ठीक है हम किसी को तो कंट्रोल कर लें, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो खुद पे आ जाते हैं कि देखो आज हमने ये करके कंट्रोल कर लिया तो एटलीस्ट हम पावरफुल है. इतना वीक तो नहीं है हमारे पास. Umesh, you're always joyful like this throughout. Yeah.
throughout. Yes, Hmm. throughout. Yes, I can vouch for it. मैं अभी 4 दिन उमेश के साथ मतलब गई हूँ रिट्रीट पे, एंड वो होता कि ये तो मैं कॉल में देखने पे तो होता ही है ऐसे कि हाँ ये, बट यस 4 days I can vouch for it. He's always joyful. He can just make you laugh and laugh and laugh and laugh. हम 3-3 4-4 बजे तक इतने हंसे है ना, आप मतलब it was, and he's always laughing, always like this. So that's a great boon for you. Yes, yes. Yeah, I'm blessed to have him, you know. He was so amazing. Hmm. Thank you so much. But Umesh, if you are happy like this, then we won't put on weight. No, Huh? I wanted to be too much for you to be always happy. After eating one chapati, the second one, if I want to eat, I think 100 times. I'm so scared of it. So I have a lot of intuitions. Okay. Yeah. Just a minute. Let me address Anju, and then we'll be back to you, Revati, again. Just for a moment. Huh? Yeah, Anju, please. And Yeah. Umesh, I've seen one more person in my life, like my aunt, my father's sister. She used to eat so much, I can't tell you, Yeah. but she was so slim. Oh, yes. And where was that food going? Yeah. So actually, food has nothing to do with the weight, really. Hmm. You can get fat just by having 2 bites, or you can be the way you are by having everything you like to have. But is there no relationship between the quantity you eat, the kind of food you eat, your age, your metabolism, and No. gaining weight? So everything is just a representation of what we are holding inside, how we are perceiving it, what and how and what we have associated with it. Even metabolism definitely works, but if it is getting disturbed, so somewhere we are holding that emotions around that is disturbing that metabolism to work in a normal way, Yeah. natural way, normal in a way. See, for me, I can relate to this fact that I know for myself, whenever I'm stressed, I Yeah, tend to eat more. yes, And recently means from the time of COVID, okay, I find that I reach out a lot to, whenever I'm stressed, I want to eat sweet things. okay, yeah, And that gives me comfort. And yes, ऐसा नहीं है कि I love all kinds of food. I'm a foodie. I eat everything balanced, more or less. Like I won't eat 5 or 6 pieces of something. But what has happened now, when I'm eating meetha, my mind is telling me bas aur mat khao, it's not good for you, but I don't stop. I eat till I feel absolutely satiated. okay, Meetha, only meetha. yeah, only, yeah, And other things though I eat normal, but from whatever yeah, little knowledge one has okay, I'm not a practicing nutritionist, but I have studied nutrition. okay, uh, I do know that there's it's like calories in and calories out, and your age and everything is related, including your, your stress yeah, levels and your joy. Some people, when they're very happy, they eat more. Some people, when they're stressed, they don't eat at all. Some people, when they're stressed, they eat more. So it varies from individual to individual. But yeah, this is a process of learning that you, whatever your intake is, you need adequate amount of exercise also to maintain that weight. mhm. And that is also one of the myths. Because what And happens you is, can, yeah, see, I know that when if I'm stressed, I am eating more,
I'm eating a half a bar of chocolate, or I'm eating 4 pieces of mithai, or so, over and above my normal food, which doesn't increase. Normal food ka intake doesn't increase, but I'm reaching out for meetha. Yeah. And I also know I cannot exercise that much to cut off, to negate the effect of that extra intake. Okay. And But according nothing stops me. to intake When is, I'm stressed, I don't get stopped. I will eat. yeah. So when you I are know. getting stressed, you are already releasing or giving it more energy than normally you do. You are using more energy to feel stressed. So it will already digest, it will digest and consume on its own. Why you have to do extra exercise? When stressing is already a job of the I can't do it only. Want to do का क्या stressing सवाल is है? होता ही नहीं है. stressing, you are eating, so stress is taking all that energy and making you calm. तो फिर That मोटापा is कहाँ से आ रहा है? फिर मोटापा कहाँ से also आ रहा है? exercise where we define that you do it physically. Yeah? But Is it Umesh, audible? Yeah. yes, it is. It is. Can you Yes. hear me? Yeah, I can. See, Umesh, when I was walking regularly, swimming, doing yoga, doing a lot of activity, Yeah. at, and it was age related also, eating more, but not putting on weight. Yeah. But अभी तो पूरा उल्टा हो गया सब कुछ. Yeah. So isn't it, see, then whilst one is saying that it is related to your emotional levels also, Yeah. but it is also related to the fact that your age, your body structure, your metabolism, aren't they connected? Aren't they connected with the emotions? Hello, Dr. Sesta. How are you? Aren't they connected with the emotions too at the same time? Age, Yeah, people look older at the age of 32. And at the age of 18 too, they get gray hair, they get wrinkles too. And they can pass out too, they can die too. At the age of 18, 15, 20, 30, 50, 60, and 100. At the age of 100 also, they are young. Hello, Chita. So what context or references, who will you compare with the age? In this age, your metabolism will get lower. no, this is what I'm saying. This is what one has read, one has learned, that Yeah. with age, it's more difficult to lose weight. But I got You it. need, That's what I'm saying. At the age of 18 years, 30, at 30 years, also people feel old. And at the same time, people at 80 also feel young enough. So whoever, no, I'm not talking about feeling. Umesh, I'm talking about biological age. feeling, in the way physical terms also I am saying. In the physical appearance also, people can't walk at the age of 32. 30 also, and at the same time, they walk very well at the age of 75 too. They can see, they need glasses at the age of 15 years, 20 years too. And at the same time, people don't need eyeglasses at the age of 80 years too, 100 years too. पर मैं तो अपने लिए पूछ रही हूँ. Yeah. I'm asking for myself because losing weight is a losing battle. एड्रेसिंग यू पर आप पूछ रहे हो जनरल के एज के साथ भी तो सबका होता है. मैं वही बता रहा हूँ कि एज को सिग्निफिकेंट कहाँ पे बना के रखा हुआ है कि एज ये है तो मेटाबॉलिज्म वीक होगा. तो दैट इज अ मिथ. क्वेश्चन जनरलाइज किया तो मैं आंसर जनरलाइज दे रहा था और साथ में जनरल व्यू के साथ नहीं दिखा रहा था कि साथ में दोनों बातें हैं. तो वो मिथ है फिर. पर्टिकुलर मैं उस रेफरेंस में बोल रहा था. और आपको क्यों लगता है कि एज की वजह से ये होगा? वही तो मैं बोल रही हूँ. ये लर्निंग, ये सीखा हुआ है ना, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है. सो दैट इज अ मिथ, इज इट? जब वो उस टाइम जिस टाइम सुना था तब सच लगा था, पर एक्चुअली वो फैक्ट है. It's not. It's a myth. Yeah. So we go to the core of it again when we do the classes. The thing I am coming up with, it is going to be a 90 days challenge. Challenge in a way we will do 24 calls. The calls will be twice a week of around 2 hours will be each call. And we will go to the depth of each and every nook and corner of it, of all the participants, whoever is joining, one person at a time. Mm-hmm. It will be in a group setting, but completely as a personalized session only. So as I'm addressing you at this point, so rest all are listening, or anyone who has the question I will address one by one.
as I had kept you on waiting when I was talking to Revati, I had kept then listened to Sumita also, then listened to you. This same process is going to be followed in the call too, and we will get to the core of everything. That Because means, if I go to the core of it right now, it will at least require 1.5 to 2 hours just to address one point. yeah. So And there are Umesh, going to be many more layers to it around that also, which we have to diversify and go deeper to it, touch every corner to relieve it from the core of it. so in a nutshell, it means that आपने जो बोला है कि जो लिखा हुआ था कि eating the food is just yummy, it's not Yeah. making you put on weight, it's not, that's a myth. So Yes. it's just your mental makeup and your emotional state that Yes, is making you totally. put on weight. Yeah, totally. Food has nothing to do with it. Then why do we reach out for food? So when one feels sad or happy or stressed, for different people, different things, why do we reach out for food then? Food is a pleasure, that is also I had mentioned. And it is giving you comfort when you are eating, you are feeling satisfied. But at the same time, you are putting it up and you have associated with me that you are not able to digest that food. Because your age has done, well, you have a certain age. At that age, your metabolism is not going to be enough strong to digest the food you are eating if you are eating more. And that is what creating everything bad. Mhm. Because when you are eating, it is completely satisfying. It is doing its job. It is giving you pleasure. But on the Okay. other hand, you are saying that I am old enough, so my metabolism is not good enough according to age. So And आप that is बोल what रहे you हो are creating, and but how, from where it is coming, how you have associated with it. Because from the needle, if the needle strikes in our hand, ना हाथ में सुई भी लग जाती है, पैर में कांटा चुभता है, वहां से लेके डेथ तक हर चीज हम चूज करते हैं, या जो चूज कर रहे होते हैं उसका रिएक्शन होता है, रिप्रेजेंट करती है वो चीजें. You take any disease, any pain, any discomfort or comfort, luxury, vice versa. सिंपल रिलैक्सेशन से लेके नींद नहीं आने से लेके डाइजेशन हो, कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज हो, सर्वाइकल है, हार्ट अटैक है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, कोई भी चीज आप नाम ले लो, आंखों का चश्मा है, आंखें दिखना या सुनना, कोई भी चीज आप नाम ले लो, वो हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट करती है बॉडी. उसमें और किसी का कुछ भी आउटर नहीं है. लोग पर उमेश एक बात और है ना, जब हम हाँ. खाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हाँ. हाँ, हाँ. और उसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं या वॉक जो कुछ भी है, तो हाँ. वजन तो कम होता है. वो पॉइंट ऑफ वजन कम वॉक करने की वजह से होता है कि वॉक करने से जो खुशी मिलती है, कंफर्ट मिलता है, उससे होता है. और जो डर होता है उसके पीछे, अगर तो वो वेट कम कभी नहीं होता है कि 2 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर भी चल लोगे दिन में तो भी वेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पर वो जो खुशी से जो हम कर रहे हैं कि अच्छा ये वॉक करने जा रहे हैं तो 4 जनों से मिलेंगे या ठंडी हवा खा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज रिलीजिंग वेट. अच्छा, अभी मेरे को बट एक वो बात पैटर्न समझ बन आई. जाता है, तो वेट होल्ड हो जाता है उधर ही कि हाँ, नेसेसिटी तो ये करना पड़ेगा ही, नहीं तो ये हो जाएगा, तो वो करने के बाद हाँ, भी वेट उतना ही रहता करेक्ट. है. तो आप जैसे बता रहे हो ना, मुझे एक बात क्लियर हुई हाँ. कि डाइट जो फूड कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज हाँ. करते हैं, that I am not able to sustain for 365 days. कुछ Yeah. महीने किया, काफी वजन कम हो गया, फिर you go back to normal. Yeah. Because that is what is giving you the pleasure. अभी Pleasure. Yes. after 5-6 months you say अरे बाप रे बाप बहुत restrictions है, अभी हाँ. छोड़ो इसको, अभी हो गया कम, वो तो हाँ, फिर और बढ़ वो जाता है. करोगे भी, पर वैसे प्रेशर कर रहे हो ना कि करना पड़ेगा, तो भी वो इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि वो उसको तो बढ़ छोड़ना जाता है चाहते ना. हो आप. वो क्रिएट कर रहे हो कि वो इफेक्ट नहीं दे तो मेरे को छोड़ने का रीजन मिले. और हमारी बॉडी को कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. द मोमेंट नहीं आप नहीं, कहोगे ना कि मैं कोई एक्सरसाइज करनी भी है, नहीं कर रही हूँ, करनी पड़ेगी मजबूरी में, नहीं करना चाहती हूँ पर कर रही हूँ मजबूरी में, अगर नहीं किया तो ये वेट बढ़ जाएगा, तो बॉडी उसका इफेक्ट देना छोड़ देगी. no, so I've understood that till you're happy doing what you're doing, whether it's exercise or whether it's eating less, that pleasure of that makes you reduce the weight. या. Not कि आप ये कर रहे हो, it's the pleasure you derive from it. That हाँ. means it's an emotional state which makes you lose that weight. It's या. not how less you're eating or how much you're exercising. या. आप एंड यही बोल रहे हो ना? हाँ, और जो इमोशंस होते हैं ना,
तो वो आपको 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतनी छोटी सी इमोशन की वजह से ये क्रिएट हो रहा है। कॉन्शियसली तो एड्रेस भी नहीं कर पाओगे उन चीजों को कि आ कहाँ से रहा है। जब हम करते हैं ना सेशंस में, जब डीप लेके जाता हूँ तो कभी वोम में क्या चीजें मदर के उसमें चल रही थी वो बातें आती है। कभी 1 साल के थे, कभी 5 साल के थे, टीचर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने टोक दी, किसमें हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, उसके अराउंड क्या सिचुएशंस है, हमने उस चीज को कैसे लिया। और वो भी उसको एग्जैक्ट उसी वे में देखने से वो चेंज होता है। लिविंग विद ग्रेटिट्यूड। यार अभी थैंक यू। नहीं तो अभी आपकी बात सुन के ना एक चीज मुझे बहुत क्लियर हुई है कि वो जो वेट लॉस होता है वो इसलिए होता है कि यू आर हैप्पी एट दैट टाइम डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. Yes. That is the trigger for the weight loss. Yeah. You Okay, are thank happy you. and at the same time, oh yeah, happiness can show up or can be in a very different way. जैसे कि एग्जांपल मैं बोल रहा था या बता रहा था ना, डाइटिंग वाला शेयर के कंट्रोल वाला। तो जब हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ चीज लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए है, और जब बाहर से भी वो लगता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी से वेट बढ़ता है या डिस्कम्फर्ट से या सेफ्टी के लिए वेट बढ़ता है। और साथ में जब हम वो चीज उसको डाइटिंग की उसमें ले लेते हैं कि और कुछ नहीं हो रहा है, चलो डाइटिंग करते हैं, वेट बढ़ गया है, अभी हेल्थ पे उस पर फोकस करें। तो डाइटिंग जब करते हैं ना, तो एक्चुअली वो वेट कम फूड की वजह से या डाइटिंग की वजह से नहीं कम हो रहा होता है। समझ उसके गई. पीछे इमोशंस होते हैं कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में है भाई, इसको हम समझ एटलीस्ट रही हूँ. हमारे हिसाब से चला सकते हैं, मतलब हम पावरफुल हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो Absolutely. सेटिस्फेक्शन सेफ्टी क्रिएट करता है Yes, yes. थी उसको। और वो Very clear. मेरे बॉडी में शो अप होती है वेट कम करने के उसमें। Correct, correct. Thank you. बहुत और क्लैरिटी आ गई एजिंग इस आपकी हमारा बात से. थैंक यू। करेक्ट. और इवन क्वेश्चंस थैंक भी यू. इंटरेस्टिंग थे जो मुझे एड्रेस करने का मौका मिला। थैंक यू उमेश. थैंक यू. थैंक यू। और एजिंग भी, सॉरी बोल रहा था पहले भी, आधे में वो कट गया। एजिंग भी, हमारी एज भी सिर्फ हमारे थॉट्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाय पंकज। सुमिता, आपका आंसर होपफुली आपका एड्रेस हो गया। और क्वेश्चन है कैसे हो पंकज जी? सुमिता, आपका क्वेश्चन Yeah. Yes. What Anjali said just now, बहुत कुछ resonate कर गया. I could get clear. Because see, when I'm telling my clients I'm into different zone, but then I want to be personally be into that zone, and I think I'll see to that classes. Looking forward for that. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you so much. That will help me a lot. Thank you. Thank you. रेवती। Yeah. Yeah. Now what is your question? No, I Hello, was just is it wondering. answered all your questions? Or Yeah, actually, what happens is many a times, I'll be very joyful, okay, eating very limited food and all that. Suddenly, when I see somebody who is very fat, obese, I feel I'm putting on weight. Okay. When you see someone obese, you start putting on I weight. feel, that weight is coming on me. Okay. Yeah. Why is that kind of a feeling? So somewhere you have a fear around it. If I do this, this will increase my weight, this will help me gain that thing. So what is the fear, if I ask you? No, like for example, there is a party going on in the Yeah. workplace, okay? And I've seen people eating chole bhature like anything. Yeah. At least they eat 2 bhatures with chole, at least. And Yeah. and I only take chole and no bhature because Okay. I'm very scared. The moment I think bhature, my God, maida, and then it goes into the oil fry. All kinds of thoughts come into my mind, Okay. or that comes into the picture, and I'm so fearful to eat that, even to taste that chole bhature.
And where is all that fear coming from कि मैदा खा लिया तो ये हो जाएगा? It's so deep And when I that. see others eating, no, I don't feel like eating also. No, where is it coming from कि मैदा will create or hold on the weight? Or it is Yeah, I harmful? don't know why, You know, there because is I no feel junk food. Even junk food is also a myth. I don't eat junk food, but chole bhature is mostly served. And the moment I see the But I bhature, was I feel, asking कि वो my God, पैसा harm करेगा या बॉडी में वेट होल्ड करेगा, वो कहाँ से आ रहा है? अगर पूछूं तो वो कब सुना था पहली बार, या कब से लगता है कि वो वेट क्रिएट करेगा या होल्ड करेगा? किसी को no, सुना? I see, if anybody who is fat and obese and they're still Yeah. eating the chole bhature, I feel, yeah, I'll also become fat like them. I totally get you, but I was asking कि वो छोले भटूरे खाने से वेट बढ़ता है, वो कहाँ से सुना था या क्यों लगता है ऐसा? I don't know. But I From feel, yeah, where chole does bhature it is one drive? thing, which is a junk food again, and samosas are junk. So, I feel the fear to eat. Like, you would say all the yummiest things, the yummiest food is all junk. Yeah. Jesus. And then I curse the people who are serving that. Then I feel, yeah, they could have served something better. Hmm? I will Like dokla. this I join. feel That's I what feel they served dokla or something really healthy food. I feel like that. Um, I can never enjoy anything good. Would you like to enjoy everything, whatever you like to eat without getting fat? Even junk food, including junk food too? I feel I can eat very. No, I am asking, would you like to? I totally get you. Okay, now, so even normal roti also you have to think if you are eating more than that. But would you like to eat everything you like to? Yeah, I In like to eat. Yeah, I like to eat pulao. Okay. But I feel, oh my God, rice again, calories, yeah, and cholesterol. if it doesn't affect you at all, would you like to be there? Yes, I too. Pankaj is saying wonderful. Pankaj, yeah. Anything I see, I feel scared now to eat. Yeah, Anything I see, anything very tasty and delicious, I'm so scared to eat. yeah. So just guys, it can completely change. It can burst all your belief systems and myths around that food, because there's no junk food unless we make it or we have associated it as care or love by our parents or friends or nutrition, मतलब the health specialists or doctors, whoever says or make it so wrong about that thing. And if you see, you are going to be in that point, you will only realize that where you have holded it, where you have made it so significant or real and true for you. So once you release that, it won't harm or affect you at all in that way. And I don't say that you just do this and it will change. I'm going to handhold you with everyone, handhold, and take you to the core of it, one by one person at a time, as we are doing here right now. इट इज नॉट कि मैंने बोल दिया कि ये क्लियर कर लेना, या ऐसे बोल दो कि वो हो जाएगा बाकी कल बताना, या देखेंगे नेक्स्ट पल में इससे ये हुआ तो फिर देखते हैं। मतलब एक एक चीज के एकदम डेप्थ में जाके उसको एड्रेस करेंगे। और मेरे कॉल नॉर्मली टाइम, जैसे मैंने लास्ट राउंड किया था तो 1 आवर का टाइम रखा था, उसके बाद 2 आवर्स तो ऑफिशियली कर दिए थे, 3-4 दिन, मतलब 2 कॉल्स के बाद ही, क्योंकि दोनों कॉल्स में 2 से 3 घंटे लगे थे, पहले 2 कॉल्स में 24 में। उसके बाद सारे कॉल्स में कुछ कुछ कॉल्स ऐसे भी है जिसमें 4.5 घंटे तक कॉल चले थे, और 2 से 3 घंटे तो नॉर्मली जाते ही जाते थे कॉल। और उसके लिए सबको एक टाइम पे बैठने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसको काम है, जो लीव करना चाहे वो कर भी सकता है। रिकॉर्डिंग एक तो रहती है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स दोनों। और साथ में क्योंकि जिस तरह से होता है तो 3 जनों को अगर एड्रेस कर रहे हैं, एक पर्सन को एक ही टाइम पे एड्रेस करते हैं, बाकी जिनके भी क्वेश्चंस हैं उसके अराउंड आ रहे हैं, या सेम सेम इमोशन इफेक्ट, तो उनको भी बेनिफिट तो हो ही रहा होता है, जो सिमिलर इमोशंस या सिमिलर चीजें। पर उनको एक को एड्रेस करने के बाद उनके जैसे क्वेश्चन होते हैं, जो जो चीजें उनके लिए शो अप हुई वहां से उसको करते हैं फैसिलिटेट।
तो वो चीजें उनके लिए भी वहां से क्लियर हुई। फिर नेक्स्ट पर्सन आया, उसको भी सिमिलर वे में उस तरह से, क्योंकि फूड कभी भी रीजन नहीं होता है वेट क्रिएट करने का, मतलब वेट का। फूड एक ही पर्सन में, एक पर्सन या दो पर्सन जो रीजन होता है वो भी हमारे एसोसिएशन की वजह से, कि हमने क्या एसोसिएट किया हुआ है फूड से खुद को। तो जब वो एसोसिएशन भी टूट जाएगी तो उस वे में बोल रहा हूँ कि फूड एक्चुअली रीजन नहीं होता है। और इससे फूड है, एडिक्शन है, एलर्जीज है, पेन है किसी भी तरह का, वो सारी चीजों पे ही हम बात करेंगे एकदम कोर तक जाके। और ये कौन स्टार्ट हो रहा है 16 या 17 से, वेडनेसडे से, डेट ध्यान नहीं है। सबको इनवाइट भी करना चाहता हूँ, जाऊंगा भी, कि 17 से 90 डेज का वो रहेगा, 3 मंथ्स के लिए। अगर वीकली 2 कॉल्स होते हैं तो होंगे। और दूसरे क्या, हाँ, इसमें स्पेशल ऑफर है, अर्ली बर्ड प्राइस है 21,000, 3 मंथ्स की प्राइस है, या 8,000 पर मंथ। अगर जिसको जैसे प्लान चूज करना है वो कर सकते हैं। और नॉर्मल प्राइस 25,000 जब स्टार्ट होगा, 16 से 17 से, जिस डेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर उस टाइम कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो वो 25,000 कॉल की नॉर्मल प्राइस, और 9,000 पर मंथ। और दूसरा, अगर किसी को पर्सनल सेशंस लेने हैं सेम वेट के लिए, तो 25,000 पर मंथ, उसमें 8 कॉल्स की चार्जेस 25,000 पर मंथ है। किसी को टाइम का है या सिर्फ 100% फोकस सिर्फ उस पर ही, भाई एक ही साथ बैक टू बैक कर ले, या एक टाइम में एक ही, भाई 1.5 घंटे में सिर्फ मेरे को ये अटेंशन मिले ना, वे के सिर्फ मेरे ही क्वेश्चन आंसर हो, या उतना टाइम किसी को नहीं है, तो वो पर्सनलाइज सेशंस भी है, उसके लिए 25,000 पर मंथ। इसके लिए स्पेशली डाइटिंग के लिए अगेन इसमें भी वो ऑफर प्राइस है। नॉर्मल सेशंस के लिए 30,000, 35,000 पैकेज होता है 8 सेशंस का। तो 8 से 9, उसमें भी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है मेरा। एक्चुअली ऐसा वैसे नॉर्मली 1 घंटे का होता है, पर मेरा टाइम से की कोई लिमिट नहीं होती है, जितने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक की जगह 1.5 घंटा है, 2 घंटे, 3 घंटे है। और काफी होता क्या है कि एक स्टेज के बाद जब मैं, जो एसोसिएशन या ट्रॉमास या मेमोरीज जो होल्ड की हुई होती है ना माइंड में, जब एक बार वो निकलती है, तो कुछ स्टेज के बाद माइंड थक जाता है कि उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और वो माइंड बोल रहा है कि बस अभी आज नहीं, तो वो मैं नहीं, वो आप ही बोलते हो कि बस आज के लिए इतना हो गया। और कुछ कुछ अगर रिजल्ट शेयर करना चाहूँ, फीडबैक, या मतलब लास्ट कॉल्स में, जो लास्ट सीरीज में जितने लोगों को बेनिफिट हुआ था, जो जो उसमें से चेतना भी है यहाँ पे, अनीता जी है, लास्ट एक लेडी थे, नासिक से थे शायद, उनको वो व्हील चेयर पे थे, पर वो 12 साल से, 13 साल से। और डॉक्टर ने बोला था स्ट्रेंथ पैरों पे अगर वेट आएगा तो वापस फ्रैक्चर हो जाएगा, तो मतलब उसमें हार्म हो सकता है, और बिल्कुल चलना नहीं। वो विद इन 8 सेशन फर्स्ट मंथ शी स्टार्टेड वॉकिंग। उन्होंने बताया कि पहले 2,000 स्टेप्स चलना शुरू किया, जब वो चलना शुरू किया तो वॉच लेके आए। कॉल में ही उन्होंने शेयर किया था, तभी पता था, क्योंकि जब एड्रेस की तो एकदम बचपन से उनसे क्या क्या चीजें किस तरह से, कहाँ पे वो खुद को वीक बना रहे थे, वो वीक बनने से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे थे उनको, जो वैसे तो वो लग रहा था कि बर्डन, या मैं वीक हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, पर वो वीक एक्चुअली, वो वीकनेस कैसे उनको कंट्रीब्यूट कर रही थी। जब वो एक एक चीज देखी, वहां से वो रिलीज किया, तो विद इन फर्स्ट मंथ शी स्टार्टेड वॉकिंग 2,000 फीट, 2,000 स्टेप्स एट अ टाइम, विदाउट एनी सपोर्ट, from wheelchair to walking 2,000 steps, and after one कॉल, एक कॉल, उसकी एक और कॉल के बाद उन्होंने बताया कि अभी मैं 4,000 स्टेप्स चल सकती हूँ आराम से। किसी को उसमें नी पेन था, किसी को लोअर बैक, और मतलब पेन था लोअर बैक और मिडिल बैक में, वो क्योर हो गया। एलर्जीज थी, वो क्योर हो गई। और वेट का तो 99% सब जने ऐसे थे कि हम कुछ भी खा रहे हैं। काफी जने तो मतलब एंड तक ऐसे के सेटिस्फाइड, या कुछ ट्रैवल पे ठीक है, नहीं जितना चाहिए होता हो गया, बाकी आ रहे हैं तो सिर्फ अटेंड करने के लिए, और वेट का इश्यू निकल ही गया। या कुछ कुछ था कि भाई ठीक है, हम एटलीस्ट वेट हमारा बढ़ नहीं रहा है, जो भी हम खा रहे हैं वो खा पा रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है, कम करना है नहीं करना है वो कोई मैटर ही नहीं करता, वेट नहीं कम करना। क्योंकि वो डर इतना होता है कि हम कुछ भी खाएंगे तो जितना है उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि कम तो होता ही है। पर एक उनको वो कंफर्ट लेवल एक बार लास्ट में आ गई थी, तो लास्ट 5-7 काउंट ऐसे थे कि चेंज तो हो रहा था, उसके बाद भी रिलीज तो हो रहा था, पर वो वैसे कंफर्टेबल हो गए थे कि
ठीक है कि जो भी हम खा रहे हैं वेट नहीं बढ़ रहा है, तब तक भी हमको उससे ज्यादा भाई वो हमारे लिए वही बहुत है। हमने तो कभी वो भी नहीं सोचा था कि सब कुछ खाने से भी वेट उतना नहीं बढ़ेगा हमारा, उतना भी पॉसिबल है। और ऐसे एक्सपीरियंस तो ये फूड के लिए तो ठीक है, वैसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जब पेन के लिए या डायबिटीज के लिए या थायराइड के लिए जो पर्सनलाइज सेशंस में करवाता हूँ और लोगों को जो बोल रहा हूँ मतलब बताता हूँ या मैं देख पाता हूँ कि इसके लिए इतना चेंज हो सकता है, उनके लिए वो जो मेरे हिसाब से 25, 30 या 40% होता है वो उनके लिए 300, 400% होता है। जिस स्टेज में मेरे पास आते हैं वो सोच भी नहीं सकते। समझो कि बेड रेस्ट में है 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से या 6 महीने से, डॉक्टरों ने सबने बोल दिया है कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उनके लिए बैठ पाना वो 200-300% से ज्यादा होता है। या अगर बैठे हुए हैं चलना उनके लिए सिर्फ चल पाते हैं हाथ पकड़ के या सपोर्ट से भी, तो उनके लिए वो भी बियॉन्ड हो जाता है कि अच्छा हम चल पा रहे हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। या कान में अगर किसी का बताऊं तो सीटी बजती थी तो उनको ऐसे ही था कि लाइफ टाइम कुछ हो ही नहीं सकता है, रिपोर्ट से वो सब कुछ कर लिया पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, उससे रिजॉल्व हो गया। तो वो एकदम से भाई हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो वो उस मतलब आधे में भी छोड़ देते कॉल देना कि बस हमको भाई इतना हो गया कि बस हमारे लिए ये ज्यादा तो हमको मिल ही नहीं सकता है, तो इतना हो गया तो ये बहुत है। और उसमें भी इतना खुश क्योंकि वो बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से 30%, 40% होता है पर उनके हिसाब से वो 300-400% से ज्यादा होता है। तो मैजिक एक्सपीरियंस करना है तो ओपन इनविटेशन है सबको। इट विल बी माय प्लेजर टू होस्ट यू। यस भाई, मैं तो आई तो गिव 100%। मैं तो अभी फिर से भी बोला कि भैया मेरे को इसके बाद भी सेशन देना, इसके बाद भी सेशन देना। आई एम तो आई इज रियली अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड यू टू आल्सो अमेजिंग, यू आर आल्सो सो। और जितने भी क्वेश्चन लोग कैसे परेशान होकर भागते हैं ना, मेरे को झेलना भी लगता। हाँ, दूसरी बात तो सिंपल सिंपल तो सबसे ज्यादा सिंपल भी और साथ में वो भी कि जैसे मैंने बोला था, लिखा भी था पोस्टर में कि कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से हंसते हुए मैं बातें करने से ही वेट कम होगा। और जो जो मैं सवाल पूछता जाऊँ उनका जवाब देना है। और जब आते हैं लोग तो बोलते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो वेट कम होना चाहिए या ये देखो होना चाहिए। एक और बात, और एक एक और मैं एक और बात बताऊं। देखो अभी उमेश से मैंने सेशन लिया, हंसी तो मैं पता क्या सोची थी, मैंने कहा यार मेरी पेट की मसल्स भी ना खूब वर्क कर रही है, वाह वाह अब तो मेरा पेट भी अच्छा हो गया। बिकॉज व्हेन यू लाफ तो तुम्हारे जो मसल्स है वो स्टमक के दैट स्टार्ट्स वर्किंग। तो मैंने कहा वाह वाह। एंड आई शेयर माय रियली आई शेयर माय पिक्चर जो आराधना ने ली थी उसमें रिट्रीट में। एंड बिलीव मी, मैंने ना हल्का सा लिप ग्लॉस लगा रखा था, देयर इज नो, मैंने कोई फेस पे और कुछ नहीं लगा रखा था ना, रोज जैसे होता है ना रूज रूज या जैसे ब्लश ऑन, कुछ नहीं लगा रखा था। एंड आई एम सीइंग माय फेस, मतलब ऐसा पिंक हो रखा है जैसे कि पता नहीं कितना मेकअप उठा के डाला हो। And I'll we share it on keep this. seeing you on morning calls, na? And I'm like, she's looking so pretty and she's shining. We keep telling you, right? Like, आप ग्लो तो कर ही रहे हो, पता नहीं तो ये है राज, अब पता चला। सच, अरे वो उसमें तो मैं ही, उस वाले में तो शायद तुम्हें नहीं, पर ये वाली फोटोग्राफ देख के तो मैं ही हैरान थी। मैंने कहा यार पूरा Check पिंक करो, हो आपने रखा देखा है। नहीं है। वो इतना हंसाया इसने, इतना हंसाया, और मैं तो इतनी, मैंने कहा ला मेरे स्टमक का भी ना, वो नहीं तो मेरे स्टमक का तो एक्सरसाइज हो ही गई। आई एम इन रमेश, अगर अनीता जी नी वाह वाह कर रहे हैं तो मुझे तो हाँ करना ही पड़ेगा। मैं हूँ, आई एम इन। डन। मैं तो अभी अभी इसके बाद लेने वाली हूँ। वेरी, ही इज रियली बहुत मजा। आई नो। थैंक यू, थैंक यू। चलो, bye bye. Thank you all for joining. Thank you so much. Thank you, Mish. Thanks. Thank Bye. you. Bye bye.